या गाइस एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू लाइव स्ट्रीमिंग। और आप सब कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा माउस का गिर गया, जो माउस का नहीं, माइक का, जो जोश में मैंने गिरा दिया, सॉरी। होता रहता है। होला होला। और कैसे हो मेरे भाई? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। गेट एक्साइटेड दे। वेलकम मेरे भाई रोलो, वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इतना ज्यादा तेज साउंड आ रही है मेरे को। तुम लोगों को भी आ रही है क्या तेज? गाने की आवाज तो नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है। गाइस जो भी देख रहा है प्लीज थोड़ा लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जो भी स्ट्रीमिंग पे है हेलो लिख दो यार, सबके सब एक बार। और कैसे हो सबके सब? और रैंक कहाँ तक पहुंची ये तो बताओ। सीजन एंड होने में कितना टाइम है, कोई मेरे को बताएगा? सीजन कब खत्म हो रहा है? ओह माय गॉड, इतनी गर्मी है। एक बार हेलो, गेट एक्साइटेड। हेलो मेरे भाई, वेलकम टू लाइव स्ट्रीमिंग। कैसे हो मेरे भाई? कल का मेरा प्लान नहीं था बिल्कुल। मैंने कल ड्रोलो, मैं डेक्स्टर, वी वर वॉचिंग मूवी ऑन डिस्कॉर्ड। न्यू मूवी थी शेरनी। आई थिंक विद्या बालन की नई मूवी थी जो अभी अभी लेटेस्ट आई थी। हम वो देख रहे थे बेसिकली गाइस। तो मेरे को क्या मालूम। नहीं, कल वो मूवी देखने का एकदम से हो गया। भाई यूट्यूब के ना, यूट्यूब अलग ही है। लोकी का नया एपिसोड कब आ रहा है? लोकी का नया एपिसोड मेरे भाई, वो तो लोकी वालों को पता कि वो कब करेंगे। सही बताऊं, देख लेता हूँ मैं भी कब रिलीज होगा। रुको, एपिसोड थर्ड है ना? लोकी एपिसोड 3 रिलीज डेट कब है? कोई न्यूज तो नहीं आई, तो पता नहीं मेरे को कब आएगा। नाइस मूवी शेरनी। हाँ मूवी अच्छी है शेरनी। कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, मतलब फालतू का कुछ नहीं दे रहा उसके अंदर। बहुत ही अच्छी है, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी मेरे को। मजा आ गया था कल। और कल थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैंने क्या करा, आज सुबह सुबह मूवी देखी भाई, मस्ती भाई। मजा आ गया था, मतलब कि फादरहुड देखी है केविन हार्ट की? देखी गाइस किसी ने केविन हार्ट की फादरहुड मूवी? मैं बोला मजा आ जाएगा देख के, सीरियसली बोल रहा हूँ तुम लोगों को। जस्ट देखना। मैंने आज सुबह सुबह देखी, मतलब मैं सुबह 6 बजे का उठा था, मैंने 7 बजे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और मैं देख रहा था भाई, इतनी मजेदार मूवी है ना। अभी बीजेएमआई है यार, अभी बीजेएमआई है। क्या वाइल्ड भाई, बीजेएमआई नहीं शाम को होता है, अभी वाइल्ड लिफ्ट होता है। नो, चेकआउट मारना। कल से मैं एनिमे देख रहा हूँ। कल से देख रहे हो? हेलो मीक, कैसे हो? अरे ठंडर, वेलकम मेरे भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हेलो ओइन, कैसे हो? ओइन, तेरा नाम ना बहुत अजीब सा है। कौन सा एनिमे देख रहा है? गाइस तुम भी चेकआउट मानना एक फादरहुड मूवी, केविन हार्ट की है, तो बहुत अच्छी, सही बता रहा हूँ। अरे अनिकेत वेलकम, हर्ष भाई वेलकम। हर्ष भाई खेलोगे बताओ?
आर यू नॉट वॉचिंग सीरीज? सोच रहा था देखने के लिए। हाँ खेलूंगा ब्रो। चलो ठीक है, आओगे अभी खेलने? यार इंडिया नहीं है ना, मजा नहीं आता भाई। ऐसे लो साला। तो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। आज सुबह सुबह देख रहा था ट्रिक की वीडियो। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट्स गो गाइस। राधे देख, बहुत मस्त मूवी है भाई, माफ कर दे, नहीं देखना। थोड़ी चूतिया नहीं होगी कि मैं राधे मूवी देखने जाऊंगा। वही मूवी मिली है देखने के लिए। रोहित यादव वेलकम मेरे भाई। 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके मेरे भाई, तो मैं 5 मिनट आपका फिर इंतजार करता हूँ। और स्क्रीन अपने लिए ले आते हैं, गेम की स्क्रीन, ठीक है। एंड गेम स्टार्ट करते हैं गाइस। क्योंकि मैं जरा आज मैं बिल्कुल रेज नहीं करूंगा ना, मैं आज बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। आज मैं ओनली जो टाइटल में लिखा है वही करूंगा। आज से मैं थोड़े अपने अंदर चेंजेस ला रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। यार तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरे नए नए चेंजेस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू गाइस विल एंजॉय माय स्ट्रीमिंग टुडे। मैं सच बोल रहा हूँ, आज तुम बहुत एंजॉय करने वाले हो। आज गारंटी, आज मैं बिल्कुल रेज नहीं करने वाला। हेलो जान, हेलो जानू, कैसे हो? मीक की भाई, भाई मारो भाई। बेटी भी आ गई है भाई, पत्नी भी आ गई है। हेलो जानू, कैसे हो? स्वीट तुम कैसी हो? आप बताओ पहले, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ। 2 मिनट रुक जाओ। चीफ भाई टी वेलकम मेरे भाई। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच चीफ। आज तो बड़े लोग आ गए भाई, थैंक यू सो मच। सर बता रहा हूँ, आज के चेंज की स्ट्रीमिंग पे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरा, क्योंकि आज मैं बिल्कुल रेज ना, मैं चिल्लाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो आज ऐसा करते हैं, व्हाट अ चैलेंज। एक नया चैलेंज मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैंने एक्सक्लेमेशन टॉप करा है। अभी मेरे माइंड में आइडिया आया है, मेरे माइंड में आइडिया है, मेरे माइंड में आइडिया है। आई एम गोना टेल यू। अगर अगर सबके सब सुनोगे, अगर मैंने चिल्लाया प्लस मैंने रेज करा, टॉप 10 के अंदर जो भी बंदे होंगे ना, आई एम गोना गिव हिम 100 पॉइंट्स। आई एम गोना गिव देम 100 पॉइंट्स। उनमें से एक बंदे को मैं 100 पॉइंट्स दूंगा, वो तुम लोग चुनोगे, ठीक है। और वो लोग तुम चुनोगे। अगर मैंने चिल्लाया और रेज करा, कुछ भी करा, तो मैं उन उन 10 में से एक एक बंदे को 100 पॉइंट्स दूंगा। बट वो बंदा रिपीट नहीं होगा हर बात पे। अगर मैंने एक बार चिल्लाया, ठीक है, फ्री पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यस, तो देख लो। तो ये है, ठीक है। आज की स्ट्रीमिंग पे अगर ये हुआ, अच्छा गया, देन इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हो जाए अनफेयर कहाँ होगा मेरा भाई? आई वोट फॉर ड्रोलो। नहीं नहीं, वो देखो, अगर ड्रोलो बोला अनफेयर हो जाएगा, तो ड्रोलो को कोई वोट मत करना, सच बोलो। मैं एक बंदे से पूछता हूँ अगर वो खेलेगा। फ्री फायर वेलकम मेरे भाई। इंडियन क्रिकेट वेलकम। एक बंदे से पूछता हूँ। आई वोट फॉर माई सेल्फ। अरे मीक आज रात।
मीक हमने एक कहा। मीक तुम्हारा रैंक क्या है? इशिका वेलकम। मेरा रैंक क्या है? एमरल्ड, एमरल्ड 3। बहुत छोटा है, मेरा मेन अकाउंट ही है बस बहुत छोटा है, और मैं क्या करूँगा। इशिका कैसी हो? मेरी पत्नी क्या बोल रही है? आज अरे रात में मेरे घर आने की, मेरे घर आने की होती है ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, डोंट वरी, देन वी विल डू सम, ओके, सम शिट बैंग बैंग, ओके। Meek, did you see what I sent you in WhatsApp? Yes, मेरे भाई, it's a fucking proof. You got a fucking proof also. G5T, yes bro. एक बंदे को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स आयरन को, यू गाइज नो, he has a YouTube channel also and he's do daily streaming also, so पता नहीं कब तक वो आईडी भेजेगा। आज कस्टम नहीं, आज कस्टम नहीं होते हैं। टीएफ विद फेस रश, इज इट गुड? जो टीएफ खेलता है वो बंदा कर सकता है ज्यादा, मैं टीएफ नहीं खेलता, आई एम नॉट अ मिड लेना, सीरियसली आई एम टेलिंग। आयरन वाइल्ड लिफ्ट, यस। वॉच माई लाइव कॉइन्स गिव अवे, ओके, थैंक यू सो मच। मैं आया, देखो बुलाया किसने, जो तू बोल रहा है मैं आया। एक मिनट जाओ, उसकी बस आईडी आने दो, मैं उसकी रिक्वेस्ट मार के उसको बुला लेता हूँ। दिस इज नेम, दैट्स द नेम। इतना बड़ा नेम भाई, सीरियसली इसका नाम है गाइस? ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा बड़ा है इसका, आई लाइक इट। एक मिनट जाओ, गाइस आज का आइकॉनिक सीरीज कौन देखने वाला है? मेरे साथ कोई देखेगा? मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला। हर्ष भाई कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। दोज हु आर ज्वाइनिंग, वेलकम टू द स्ट्रीमिंग गाइस, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर, जो भी करना गाइस कर देना फटाफट यार। बस रुक जाओ, बस उसके साथ बस अभी आ रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर ले, फटाफट 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 कर ले। अरे एक्सेप्ट करो भाई, AWCEPTED। कितना टाइम लगा रहा है ये? रोलो, रोलो तूने ये क्या कमेंट किया है? ओके, हेलो। ना ये मेरा स्मर्फ नहीं है मेरे भाई, नहीं मेरा भाई स्मर्फ नहीं है, मेरा स्मर्फ भाई प्लेटिनम 1 का है, जो खेलता नहीं हूँ, टाइम नहीं है, क्योंकि पहले ये तो डायमंड पहुंच जाए। हाँ, डिलीट कर दूंगा, सॉरी। जी 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 जी। ना लॉजिक गेमिंग, वेलकम मेरे भाई, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रदर। आज कस्टम क्यों नहीं कर रहे हो? कस्टम शायद 2-3 दिन से नहीं कर रहा, क्योंकि इशिका, क्योंकि अब बंदों को कस्टम देखना पसंद नहीं, इसलिए हम कस्टम नहीं करते। बंदों को देखना पसंद है रैंक है, तो इसलिए हम रैंक खेलते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम कस्टम पे? एक चीज बताओ आप।
बोला मेरा अकाउंट कौन से रैंक पे है अभी? तुम तो भाई डायमंड पहुंचने वाले हो जल्दी से जल्दी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम डायमंड पहुंचने वाले हो, क्यों टेंशन ले रहा है तू? तेरा डायमंड होने वाला है। एमरल्ड 3 तो हो गया, 2 भी हो जाएगा, 1 भी होगा, देन हो जाएगा। अंडर वेलकम भाई, कैसा है? उन्होंने बोल टाइम कितना लगता है? वो मेरा भाई खेल रहा है क्या? आई थिंक इट्स माई ब्रदर। मेरा भाई खेल रहा है। इतने टाइम के बाद आज वो वाइल्ड रिफ्ट कैसे खेलने लग गया? तू पहले था। अब चल नो बोले गाइस, जो भी देख रहा है प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये सुबह सुबह में मेरे यहाँ पे मेरे को परेशान करने के लिए ये भूख फूकना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, है ना? है ये लोग। गेम के समय मैं बिल्कुल भी रेज नहीं करने वाला और ना मैं चिल्लाऊंगा। मतलब कि जो पागल तो चिल्लाता हूँ ना लोगों के ऊपर, वो नहीं चिल्लाऊंगा बिल्कुल भी, ये सोच के रखना। वो मेरे भाई, हेलो, ये मिट जा रही है क्या? अच्छा, ओके लक्स बेबी, सेकंड टाइम पे आ जाना जल्दी जल्दी। अरे डोंट वरी यार, हम तुमसे पहले पहुंचो दिखाई देंगे वहां पे। अब देखे वो टीम में बस गाने वाने चला दूंगा इस, क्योंकि मेरे को बहुत शांति सी लग रही है, क्योंकि दोनों में से कोई बंदा बात नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ गाने चला देता हूँ। एटलीस्ट तुम भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, तो मना मत कर देना, सबके सब बोल रहा हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से। शीला की जवानी लगा। हाँ हाँ, और तू नाचेगा वहां पे खड़े होके गलियों में, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, आंचू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आए, और मैं तेरे ऊपर ऐसे ऐसे पैसे उछालूंगा। नहीं जा रही तेरी मेन आईडी पे, पता नहीं क्यों फक हो चुका लगता है ये राइड गेम्स 2 है साल। देखो गाना इसलिए चलाया क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे तो अपना आपको ना पागल एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, और तुम लोग भी हो जाओगे। मेक तो रेज कर रहा है? नहीं, मैं रेज नहीं कर रहा, दिस इज नॉट ए रेज। पहले तुम जाके रेज का मतलब सीखो, तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तुम पढ़ाई करो, ठीक है? ये सब मत करो काम। Oh my god, level 6 निशाना। Minions have spawned. The darker the night, the brighter the stars. अबे चल, तेरे इंजन पे मूत दूंगा मैं। देखिए देखो बेसिकली गाइस, देखो मैं इस ये जो इंजन पे मूतने वाले बंदे पे ना मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दूंगा।
We are about to begin the fight. इतना वर्थ इट नहीं है। इस इंजन पे हमेशा मूव करूंगा मेरे। Friends, what could be better? First blood. Enemy slain. Nice. Ally slain. The darker the night, the brighter the stars. Then Enemy slain. Ally slain. भाई इग्नाइट है ट्रिस्टाना के पास गाइस। move like they hurt. My shield is my sword. इतना ट्राई हार्ड क्यों कर रहा है बंदा? सोलो में आते हैं। Fuck. If you have problem, you come to me first. और सब बढ़िया जंगल। Move like they hurt. Sorry again. Logic Gaming subscribe. Logic Gaming, thank you मेरे भाई, thank you for lovely support, thank you. On my way. Let's go. The darker the night, the brighter the stars. हमारे गैलियो भैया इधर है अभी। On my way. Under attack. Enemy missing. Move Retreat. Enemy slain. ओबे भाई इनकी तो दुनिया में अंधेरा हो गया। Ally slain. पीछे से रेंगार आ रहा है, पीछे से रेंगार आ रहा है। Retreat. Danger. You can always trust bro. Okay, they have this now. Perfect. If you have problem, Help you the come Kha'Zix. to Bottom turret is under attack. Enemy slain. Killing spree. Engage. times good friends. What could be better? Dragon time, just go. Okay, just let's start. Engage. Dragon has fallen. My shield is my sword. If you have problem, you come to me. The enemy team has stolen the dragon. Rampage. You have been slain. Enemy slain. Move मैं ब्रॉम like खेल they रहा hurt. था उस दिन। भाई कैसे मिड लेना रहा है? Enemy That's really slain. nice. Nice, well played, brother. साले ने आते ही स्माइट कैसे मारती साली? If you have problem, Ally you come to slain. me first. मैं आ रहा हूँ। Killing spree. बस Always trust bro. हर्ष भाई बी केयरफुल, ठीक है? Middle turret is under attack. ये ट्रिस्टाना ना बहुत read solar chat. Times good friends. If What could be I better? go your text from many people in Discord. Sorry, I can't come online much.
I will test Enemy you if I slain. can play. Okay. Ally slain. Is on the job. First we Right turret is under attack. No one is here. The Rift Herald has spawned. the darker the night, the brighter the stars. Allies. Just don't take fight, okay? We are coming. Shut down. We got the first turret. Middle turret is under attack. Destroyed. Engage. Perfect. The enemy team has slain the Rift Herald. Ally slain. Problem, you got to Unstoppable. Enemy slain. Top turret is under attack. Lost. trust Rome. I think we should back. Retreat. Retreat. Ram is on the job. हाँ भाई 100 पॉइंट सही है. I think we should target up a mid lane now. The brighter the star. और इस बार ड्रेक अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार वो दिखाओ तो इमोजी कोई. अगर मेरे को तुम्हें मेरी आवाज आ रही जंगलर. हाँ सुन रहा हूँ. तो सबसे बेस्ट है इस बार ऑब्जेक्ट लेने से पहले ना इनको पहले मारेंगे, वो भी जंगलर को इम्पोर्टेंट है क्योंकि साला ये गेम ना बिगाड़ दे. मैं जा रहा हूँ बॉट लेन पे. Bottom turret is under attack. On my way. दूसरा टावर तो नहीं ले पाएंगे, Ram लेने नहीं देंगे. on the job. Turret lost. My shield is my sword. On my way. The dragon has spawned. If you have problems, Ally slain. I got this Seraph in. We can't start. On my way. Ram is on the job. Engage. Bottom turret is under attack. Ally slain. Shut down. Enemy slain. Enemy double kill. Ally slain. वो कैसी मिड लेना मिली है हमको यार, ये सच में. Ally slain. Good times, good friends. The enemy team has slain the dragon. 8 more likes for 30 यार, बोल देना. चैट भी देखो, बहुत चैट मिस हो रहा है. पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, रुक जा. इसको ही पकड़ेंगे, इसको ही पकड़ो. You called wrong. Enemy slain. या मैं अभी ना म्यूजिक अच्छा लगा रहा है गेम को. Hey mate, Ally slain. You can always trust Rome. Retreat. आज भाई आपकी तरफ आ रहे हैं सबके सब. Has spawned. Middle turret is under attack. My shield is my sword. यार हमें ना उखाड़ना पड़ेगा भाई. Retreat. Retreat. If you have problem, you come to me first. You hit my baby ram. Engage. Retreat.
ये ट्रिस्टाना आती है भाई अंदर सबसे पहले गई Enemy killing spree. सेराफिन गन That's really nice. Engage. Enemy rampage. Ally slain. Move like they hurt. The enemy team has slain Baron Nashor. Enemy slain. Move like they hurt. Attack the turret. गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग ये बताओ ना यार हमारा मिड लेनर अब वो चला गया You can always trust raw. Lolo I got a good name क्या good name When going gets tough, you call raw. Retreat. Lost. Enemy turret destroyed. The darker the night, brighter the stars. Enemy is unstoppable. Mid turret नहीं कर under पाएंगे attack. Turret lost. Inhibitor turret is under attack. काली तो Move Fair bye. like they hurt. Turret lost. Top turret is under attack. Attack the dragon. Ally slain. From Turret lost. the job. Bottom turret is under attack. Like they hurt. Oh my god, get to the point. Nexus is under attack. If you have problems, you come to me first. Bottom turret is under attack. The dragon. Turret lost. Ram is on the job. मीक आज ने चैलेंज लिया है स्ट्रीमिंग पर गैलियो को पकड़ो गैलियो को पकड़ो Move like they hurt. अरे 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 ये आ रहा है Engage. Engage. Ally slain. Good friends. Baron Nashor has fallen. Inhibitor turret is under attack. हार्दिक भाई वेलकम Perfect. वन शूटिंग वन शॉट बिल्कुल You're right. The enemy team has slain Baron Nashor.
You come to me first. Enemy is dominating. Enemy slain. Enemy killing spree. Enemy double kill. Enemy is godlike. Enemy double kill. Enemy rampage. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Defeat. Oh my god, guys, कितना अच्छा गेम गया ना. Oh my god. चैट देख, बहुत मिस हुई है. जी जी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बोला. साला चश्मा पहन के नोटिफिकेशन आती ही नहीं है मेरे भाई. किंजो मेरे भाई ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, ज़्यादा बेटर है, वो सबसे बेटर रहता है. उसमें सबको पता चल जाता है मेरी स्ट्रीमिंग कब हो रही है मेरे भाई. अरे अरे क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा. इशिका हमारा कट चुका है, अब कुछ नहीं कह सकते हम बिल्कुल भी. सॉरी, मैं गाली नहीं बकूंगा ना, मैं कुछ रेज करने वाला. टेबल किंग मेरे वेलकम मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. when we watch Meek streaming, Meek typing GG mate, GG Baron, GG jungle, GG ADC, but deep down all know it's supportive. ये लो अच्छा लगा मुझे खुश कर दिया आपने. 5 मैन खेले ना अभिषेक भाई, मन नहीं करता भाई. 5 मैन बहुत डिफिकल्टी रहती है मेरे भाई, क्योंकि आई एम डिफ, मैं नहीं कर पाता. चैट में सॉरी, मेरे को पता चल गया. ठीक है भाई, सी माय ऑल चैट्स ओके. अमेजिंग 100 पॉइंट जेक्स्टर, 100 पॉइंट मेरे भाई. एमरल्ड रैंक जिरेन ने पहुंचाया है ये, हाँ पता है. दिस इज चाइनीज आईपी एड्रेस. यस मीक रीड 16 की चैट मैंने पढ़ ली है. बिल्कुल भी ठंडा है, मैं तो खेल ही नहीं रहा हूँ. वाइल्डलिफ्ट मेरे अकाउंट से तो जिरेन कभी खेलता है, हाँ पता है. रीड आर्टिकल IGN इंडिया. क्या करेंगे आर्टिकल पढ़ के? कौन सा मेरे बारे में कुछ न्यूज़ दे रखी है? सॉरी मीक, आई कांट प्ले, आई एम इन नेटिव विलेज, नो प्रॉपर इंटरनेट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज. आई माइट गो होम नेक्स्ट मंथ. ओके दैट्स रियली नाइस. ओके एंजॉय द ट्रिप. ओके डिसेप्टिकॉन सॉरी अगर बुरा मतलब. अरे डिसेप्टिकॉन के इंजन पे मुद्दा कुछ नहीं होगा, कोई बुरा नहीं लगता साले को. ये साला इंजन भी चूतिया साले का, नकली इंजन है. इनडायरेक्टली टेलिंग मी, दिल्ली से होके गाली नहीं बक रहे हो. अब गाली बक सकते ना, अब गाली बक सकते हैं. मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला गेम के समय कोई गाली नहीं बकूंगा, बिल्कुल भी कोई रेज नहीं करूंगा. ये साले मादरचोद कुत्ते के बच्चे, इनको साले इनके साले किडनी के अंदर मैं साला टट्टियां घुसेड़ के दूंगा. सालों की किडनी के अंदर टट्टियां भर दूंगा. सालों की नाक के अंदर ना मैं साला क्यों फिक्स चिपका के ना साली यूं करूंगा, ऐसे करूंगा. साले इनकी किडनी बाहर निकाल के ना इनसे यूं गिल्ली डंडा खेलूंगा इनकी किडनी से. साला ये मैं साले मेरी कायसा ले ली. मेरा वाइटी का Quest accepted. Wait, where are we going? चलो गाइज, मैं तुम्हें एक चीज बोल देता हूँ. चलो गाइज चेकआउट कर लो फटाफट. इट्स आयरन चैनल है भाई, हमारे साथ खेल रहे हैं. जो जंगलर है मेरे साथ खेल रहे हैं. हम गोना शो इस चैनल ऑल्सो. एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार ये मत देखो यार, प्लीज चैट मत देखा करो. सॉरी
ओके ठीक है। ये हमारे साथ खेल रहे हैं, देखो इट्स मीक गेमिंग की शक्ल दिखाई दे रही है ना यहाँ पे। अरे मीक गेमिंग की शक्ल दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, सॉरी शक्ल नहीं, चैंपियन दिखाई दे रहा है, इट्स मीक गेमिंग। ओके हाँ तो जाओ यार, मैं चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे जाके वो कर दो। ये लो ये लूलू इतनी अजीब है कि मेरे भाई हील भी नहीं ले सकती, तो मुझे लूलू पे भरोसा नहीं है। मेलफाई मिड जीजी मेरे भाई क्या बोलते हैं, डोलो यू लाइव इन दिल्ली राइट, यू लिव इन दिल्ली। नहीं डोलो जेल में रहता है, जेल में रहता है, यूएस की जेल में। कैथोड का बेटा, अच्छा डोलो भाई तुम भी खेल लो, फ्लैट में बैठे हो बोलो। आइकॉनिक सीरीज में एडीसी एग्जॉस्ट लेके घूमते हैं, Welcome to Wild कुछ नहीं कह सकते किसी का। I don't care where here is. Just pull me On to my an way. adventure. Minions have spawned. लाइक कर देना गाइस, जिसका मैंने लिंक भेजा ना स्ट्रीमिंग का, Who needs a map? स्ट्रीमिंग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उनका सपोर्ट मिल जाएगा उसको भी। I'm not even breaking a sweat. यार जंगल अगर टॉप पे आ सकते हो। I'll make this look easy. On my way. I'm not even breaking a sweat. Flash of gauntlet. First blood. Enemy slain. Gauntlet, let's clear a path. Ally slain. You have slain an enemy. A true display of skill. फक यू इसके लिए। Middle turret is under attack. Top turret is Got under talent, attack. there's no such thing as a lucky shot. फक यू इज नॉट an abuse word यार, guys the fuck is not an abuse word, भाई fuck you is not an abuse word, तुम क्या बातें कर रहे हो। Oh, a plan. Yeah. I fuck you is a fuck मतलब it's a normal word for our, अब इंडिया में भी नॉर्मल वर्ड हो चुका है, तेरे को पता है नेक्स्ट है यार। यार तुम लोगों को पता है यार, it's a normal word यार। Ally slain. I'll make this look easy. Bottom turret is under attack. Engage. Oh, a plan. Guys, it's a normal word, report child abuse. For what? Enemy slain. Retreat, retreat, retreat. You have been slain. Middle turret is under attack. Top turret is under attack. Ally slain. Guys, seriously, I can't do anything because my jungler, Middle turret is under my attack. support is not good. I'm telling you, उसका support बहुत अच्छा खेल रहा है। Top turret is under attack. Oh, a plan.
I'm not even breaking a sweat. The dragon has spawned. Time for a true display of skill. Middle turret is under attack. Enemy slain. Retreat. On my way. भाई पहले मारना पड़ेगा. The dragon. मैं सही बोलूं, पहले मारना पड़ेगा. आयरन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. Ally slain. Engage. Really worth 10 times the asking price. 100 point spam boys. 10 point spam. भाई ये लुलु सिर्फ एबिलिटी स्पैम मार रही है. That's a big difference ना. Turret is under attack. Ally slain. Enemy killing spree. Blast them, Gauntlet. Middle turret is under attack. The world's on the brink of annihilation. The enemy has slain the dragon. यार कितना टाइम वेस्ट कर दिया इन लोगों ने. Top turret is under attack. First turret destroyed. For show. The गाइस तुम्हें ये लगता है ये सपोर्ट प्लेयर अच्छा है? काट The के Rift Herald has spawned. भाई क्या ही बंदे मिले मेरे को यार. मेल फाइट मिड मिल रहा है एक तो प्लस. Ally slain. Middle turret is वो under बस attack. अपनी एबिलिटी स्पैम मार रही है और कुछ नहीं कर रही. Turret lost. Sounds dangerous. सेटअप I'm बिठाना in. था मेरे को. Ally slain. Bottom turret is under attack. Enemy slain. Middle turret is under सब आ attack. रहे हैं. The Gauntlet's for show. The talent's all me. Bottom turret is under attack. Tell me the odds. I dare you. Blast them, Gauntlet. Enemy slain. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. In retreat. You have been slain. क्या है यार ये बंदे सच में. मेरा सपोर्ट किधर है Enemy slain. भाई? Where is my support यार? I'm at my best when the world's on the brink of My annihilation. God guys, क्या गया ये गेम भी गया. Middle turret is under attack. भाई हमको मिड लेन पुश मारना चाहिए. वो पता नहीं वहां पे जाके अपने आप को मरा रही है. Who needs a map? अरे भाई क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है ये गाना. Blast them, Gauntlet. Retreat. Ally slain. कैसा भाई? दो Attack दो the Rift तीन. Herald. Engage. I'm at my best when the world's on the brink of annihilation. On my way. I'm not even breaking a sweat. You have been slain. Ally slain. Top turret is under attack. Middle turret is under attack. डिसेप्टिकॉन तू पढ़ाई कर ले जाके भाई. देखो रेज का मतलब नहीं पता. Bottom turret is under attack. Sounds dangerous. I'm in. Ally slain.
Top turret is under attack. तो पैसे भी ना भाई. The enemy team has slain the Rift Herald. जी है भाई पूरा का पूरा. Oh, a plan. Yeah, I totally have one of those. यार किसी को तो मिड खेलना पड़ेगा यार, सही बताऊं. मिड जंगल. Turret lost. क्या ही बोले यार सच में इन लोगों को. Dragon has spawned. Enemy slain. यूजलेस है. Retreat. Killing spree. Top turret is under attack. Baron attack the dragon. आ जाओ मैं. I'm at my best when the world's on the brink of annihilation. I'm not even breaking a sweat. कौन सा ट्रैक मिला मैं? Enemy killing spree. When you've got talent, there's no such thing as a भाई जब मैं करता हूँ तो मेरे को भाई जब मैंने सपोर्ट करा पिछले गेम में मेरे भाई मेरे को पता नहीं कैसे मिल गया मेरे भाई. नाइस. Middle turret is under attack. Engage. Who needs a map? Bottom turret is under attack. Well, let's clear a path. Ally slain. Enemy slain. Shut down. Oh, a plan. Yeah. Bottom turret is under attack. क्यों उतनी रिवन ही मेहनत कर रही है. Double kill. अरे यार रिवन थ्रो मार देना यार ज्यादा बेटर है यार. मेरे से पैसे ले ले, मना नहीं करो. Enemy double kill. Ally slain. Shut down. भाई ये लुलू पता शील्ड भी नहीं देती गाइस. लुलू शील्ड भी नहीं देती है. ये ऐसी सपोर्ट प्लेयर है कि इसको शील्ड भी नहीं देना. Enemy slain. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. Time for a true display of skill. I'm at my best when the world's on the brink of annihilation. Ally slain. Enemy double kill. You have retreated. कहाँ से कहाँ आ जाते हैं भाई. ठीक नहीं टोलो. टॉप वॉच बनाओ. Sounds dangerous. I'm in. The enemy team has slain Baron Nashor. Time for a true display of skill. Enemy killing spree. Retreat. Enemy slain. Bottom turret is under attack. Enemy slain. भाई क्या कैसा प्लेयर है यार. Double kill. इतना डैमेज है मैं कुछ नहीं कर पा रहा. Shut down. Turret lost. नाइस यार. Double kill. Enemy slain. एक्स्ट्रा यार क्या हो Enemy गया. turret is under attack. Turret lost. And Ally slain. मेक एज वेल खेलो Enemy वन शॉट. slain.
ally भाई slain. एडी में तो कुछ हो नहीं रहा, Oh, a मेक में क्या हो flare. जाएगा? Yeah, I totally have one of those. I'm not even breaking a sweat. Gauntlet. The dragon has spawned. I'm at my best when the world's on the brink of annihilation. Time for a true display of skill. Sounds dangerous. I'm in. Enemy killing spree. Retreat on my way. You have been slain. Enemy double kill. मेल फाइट को देखो गाइस, मेल फाइट को देखो, वो बेचारा अल्टीमेट नहीं चला पाएगा। Slain. Aced. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Defeat. गाइस मिड लेन खेलना पड़ेगा यार। मैच डिफ नहीं मेरे भाई, हमारे 2 प्लेयर ही डिफ हैं। तो क्या करूं यार, बताओ ना तुम लोग, साले इतने बड़े हरामखोर लोग हैं यार। मीक इज डिफ, मीक तो है ही यार, साला जितना भी सही खेल लो यार। मैं सोच रहा हूँ साले इतनी तेज की आवाज कहाँ से आ गई, भैंस की टांग, कीड़े पड़े। गाइस हमें एक बंदा और चाहिए, अगर किसी को आना है तो आ सकते हो यार, आना, अगर किसी को आना है तो यार आ जाओ यार। अभी किसी को भी खेलना है तो आ सकते हो खेलने। मेरे को हफ्ते देखे हैं, मेरे को हाँ तू टॉयलेट में ही हफ्ता रही हो अभी तो, क्योंकि तुमने सीखना स्टार्ट करा टॉयलेट में। ऐसे ही तुम्हारा साला पूरी पीढ़ी तुम्हारी डिसेप्टिकॉन की साली घटिया है। स्पॉटिफाई अभी इंस्टॉल हो रहा है एकदम। उसने वीपीएन लगाया, रुको सन। ये क्या हो गया? यार किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। हर्ष भाई कोई है? ये लो। वो तो पहले ही गायब हो गया।
गाइस हमें एक बंदा चाहिए यार, अगर कोई भी है तो आ जाओ यार। सब मैच में है, तुम दोनों खेले फिर, आप मिड लेन खेल रहे हो। चलो ठीक है, 3 मैन यू खेलो ना मेरे भाई, यू खेलना नहीं है मेरे भाई, यू खेल के कुछ होता नहीं है, सामने वालों का पिंग बेकार आ जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं ना यार। तो हमें करना है नहीं सामने वालों का गेम खराब यार, फालतू का गेम खराब होगा यार। अब ऐसे ही हमारे इंडिया में मेरे भाई बंदे मानते नहीं है भाई। डिसेप्टिकॉन जा दोनों एक दूसरे के इंजन का। हाँ मैं हर 4 डे में एक बार रैंक खेलूंगा फ्लॉल। अच्छी बात है। यार ये टीमों भाई आते ही मास्टर ही तो चलो सही बोला, ईयू मत खेलो, ईयू खेल के जल्दी क्लाइम हो जाएगा। लेकिन शॉप करके क्या फायदा भाई। देखो मैं एक चीज बोलूं, मुझे स्ट्रीमिंग पे दिखाना सही रहता है। I decide what the tide will bring. अभी हेड पे हार्ट अटैक आया, दिल पे लग गई ये बात लेजेंड। पर मैं क्या बोलूं भाई, हमारे इंडिया में बहुत लोग ईयू पे खेल रहे हैं। हमारे इंडिया में गाइस बहुत बंदे ईयू पे खेल रहे हैं। सच बता रहा हूं, बहुत लोग ईयू पे खेल रहे हैं अभी भी। पर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कौन कौन खेलता है। आज तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बिलीव भी नहीं करोगे। मास्टर जी सब ठीक रहेगा। हर्ष भाई अगर पिंग हाई आया तो बता देना, मैं वीपे बंद कर दूंगा, वरना मैं चले जाऊंगा। नाम ही से पेंटा चाहिए, पिंग हाई आएगा तो बता देना। The seas are rising. सभी खेल रहे हैं मेरे भाई, Minions have एक spawned. सब पता है, लेकिन लोग बिल्कुल यार। People and their air. मैं खेलता हूँ भाई। ताकिर गेम यूट्यूब वेलकम मेरे भाई। This is Mary's play. Win against और फायदा नहीं ना मेरे भाई, तुम लोग पहुंच भी जाओगे मास्टर तो फायदा क्या है। Middle turret is under attack. Do not outsmart. मैं बस 3 गेम People and their air.
from the enemy champion. बेटा इसी से मिल लूंगा। I will see my home again. Alarm? Snooze. On my way. Danger. मैं मास्टर के पास जा रहा हूँ। भूल गए? Let's see who's going down. Blood. The middle turret is under attack. वेल प्लेड मास्टरी। Enemy double kill. Ally slain. We are all tied to the ocean. नहीं खेलना आता। Triple kill. जी, जी। Enemy killing spree. जी गाइस। वर्ल्ड चैंप। वर्ल्ड चैंप। गाने सुनो एड फ्री और डाउनलोड भी कर लो बिंदास वो भी हाई Enemy slain. फ्रेंड्स एक I will see my home again. नाउ टेल मी The sea has no pity. क्या बारिश वरे गो गो यू फक। मास्टर ही इन्वेड कर रहा है। यस मास्टर ही व्हाट द फक। मास्टर ही इन्वेडिंग लीच I इन का। still hear the song of the sea. काइसा को वो भी ट्रिपल किल मिला है ना? नहीं क्रिस्टाना को ट्रिपल किल नहीं मिला। ली सिंह को ट्रिपल किल मिला। Danger. जंगल की प्रॉब्लम होगी। Sure as the tide. Let the seas reclaim them. Retreat. नहीं वो तो मुझे पता है कुमार भाई, ये तो मेरे को पता है। मास्टर ही जो सबसे वीकेस्ट अर्ली गेम में है इनके। हाँ Swim बात against तो the है, current. बात तो सही बोली। आई मीन मेरा पहला जंगलर था वो 20 किल दिया। Ally slain. Sure as the tide. The sea has no pity. Middle turret is under Really too attack. good. Good morning. Top turret is under attack. The dragon has spawned. Retreat. 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 वार्ड लगा देना। My quest beckons. You win this game। अरे डेक्स्टर भाई जीत जाऊं तो अच्छी बात है भाई। तुम्हारे मुंह पे घी शक्कर या मुंह के अंदर घी शक्कर। रकान आ रहा है। Slain. Ally slain. क्या कर रहा है ये मास्टर ही साला? Still hear the song of the sea. Enemy rampage. We are all tied to the ocean. Ally slain. यार मेरे को कोई बंदा आ जाओ यार, तीसरा बंदा कोई भी आ जाओ यार। See my home again. मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए। Enemy is unstoppable. Top turret is under attack. My quest beckons. नहीं जीत पाएंगे।
The Rift Herald has spawned. The enemy team has slain अब the क्यों dragon. अब क्यों रुका है ये? मुझे लग रहा है मेरे को ही खेलना पड़ेगा जंगलर यार. I will see my own. Ally slain. ना तो ये कैसा अच्छा खेल रही है यार. Enemy Sorry, I killing get spree. done! Citrus, didn't you subscribe to the channel? Game tube, thanks for the People subscribe. in their air. ना तो ये अटैक करती है यार. भाई कैसी मुझे एक एडीसी प्लेयर मिली है यार I will सीरियसली. see my home again. भाई यार सरेंडर मारो यार. The enemy team has slain the Rift Herald. थोड़ा गैप ले लो. मुझे भी लग रहा है थोड़ा गैप लेना ही पड़ेगा. कंटिन्यू नहीं. Is under attack. Bottom turret is under attack. My quest beckons. Let the seas reclaim them. Bottom turret is under attack. Still hear the song of steel. First turret destroyed. बेकार है. Enemy is dominating. Enemy rampage. Sure as the tides. Enemy is godlike. On my way. Top turret is under attack. Middle turret is under attack. हर्ष भाई थोड़ा गैप लेते हैं. 3 गेम मार चुके हैं. Turret lost. लॉल कोई सपोर्ट इस टाइम यूज नहीं. My quest beckons. या मैं कितनी बार तो बबल पे कर दिया ना तो वो कैसा मार रही है उसको. भाई मैं क्या ही करूं यार. इतने डिफ प्लेयर है मतलब क्या बोलूं भाई. अपने ऊपर अच्छी आ Sure रही है. as the tides. Let the seas reclaim them. My quest beckons. Been slain. प्ले कॉपर से एआई एंड देन गो Middle फॉर द turret is under attack. में क्या आ जाएगा. I will Middle see my turret home. is under attack. Turret lost. Swim against the current. Ally slain. Retreat. You have slain an enemy. Shut down. Swim at your own. Baron Nashor has spawned. The dragon has spawned. We are all tied to the ocean. Enemy killing spree. Enemy double kill. माय Enemy गॉड यार. rampage. चला ऐसा जंगलर मिल जाए ना मेरे भाई हम सारे मैच जीतेंगे. On my way. Attack the dragon. I will see my home again.
enemy team has slain the dragon. क्या यार ये क्या Roar मास्टरी as the है tides. जी वेल प्लेड यार Defeat. I decide what the tide will bring. चलो हर्ष भाई बाद में खेलते हैं क्योंकि ये लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर लेते हैं पहले मैं तो ये तो खाली खुद की तबीयत खराब हो रही है Sorry again. Kumar Singh subscribed to the channel. अरे कुमार सिंह भाई थैंक यू Sorry again. Ravi Mishra subscribed to the channel. रवि मिश्रा थैंक यू सब्सक्राइब To do so, SBTC find a chance to claw their way back into the game. Like you mentioned, they collapse on this Baron lane, pick up that tower pretty quickly. The mid wave not exactly set up in their favor though, so let's see how they force this one out. Engage coming in as they do manage to lock down the Dragons. Gragas looking to lose a lot of his health right away. Redemption will be used on both sides as the Galio jumps back in with the ultimate, not able to get a lockdown onto too many. Tipper loses a lot of health, he still has his Guardian Angel. TF might just go down. Great kick coming out from Valdez as he takes down the Vi. Aquino is dead too, it's a double for this Lee Sin. And that's all they needed to do. EVOS, with control of the game, break open the inhibitor turret. They've still got Baron in hand, and they are looking to lock their way in, out of the group stage, into the playoffs. Good position. The Baron does run out, so Evo's in a slightly worse position than I initially thought. To try and end this game off, 19 minutes in, they still have a क्यों रो रहा है भाई हेमंत भाई मैं रो नहीं रहा मेरे को जुकाम हो रहा है look towards the Ezreal now already completing 5 items with including the boots. अब मैं कौन सा रोने वाला हूँ इन चीजों पे मेरे भाई A lot of damage, and this is what you were talking about. As मेरा थोड़ा सा mind fuck है इन लोगों की वजह get ahead, Hero is a substantial amount of damage source. We'll have to see if they are gonna be able to win these team fights. Otherwise, have to deal with a crashing wave coming in. I think I've turned the corner, right? Because we are at the point where Ezreal and Gragas and Garen are all serious threats, and I don't want to undervalue that. But now that EVOS have broken an inhibitor, And my thanks for the subscribe. incredibly difficult for SBTC to contest anything on the map. And EVOS have 3 Drakes and an Elder coming up. It's very hard for me to see SBTC turning this around. The only way they get it is if क्या हो गया मैं भी जस्ट आया स्ट्रीम पर कुछ नहीं मेरे भाई 3 मैच हार गए इतने शिट प्लेयर मिले कि मेरे भाई आप पागल हो जाओगे That weird spot देख के might actually कैंसर है मेरे भाई वो बंदे कैंसर प्लेयर है ऐसे प्लेयर मिल रहे हैं मेरे को 3 मैच हार गया तो थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं बीच का गैप फिर से खेलेंगे So this मेरा माइंड थोड़ा फक है could अभी be the last उन बंदों chance की that वजह से SBTC have to win out a good fight to bring them back. इंस्टेंट लॉक मास्टरी And the hard part is, EVOS can just back away from this Baron, let the split push from Thipper in the bot lane work, let the super minions split push. They don't need to fight here, they don't need to do anything. They can just force SBTC to reset and take advantage of it. Not sure where they want to go for this fight. भाई क्या ही पकड़ा भाई लूसिंग को नाइस अल्टीमेट यहाँ पे जाना है अल्टीमेट चल गया यहाँ पे क्या बात है ग्रेगास के साथ बहुत शिट हुआ है And so is Cat City. He dives into the back line. Pippa crashing away down towards the bot side, and they're on to the Nexus. There's not much more. भाई क्या लीसिन बचा है As they go down one by one, Meek is likely to fall. Nexus and Ignite taking down. Hero doing the best that he can, gets a double to try and slow down Evils, but it doesn't stop them as they pick up this win. That was a weird kick from the deep dive at the end. Valdez
not finding optimal engage, but G4 makes it work. G4 playing the Galio that game so impressive. Multiple times finds the 3-4-man taunts that saved the day. Came from the LST, the League of Legends PC Pro League. Attended Worlds in 2019 and now is here to make things happen in WILDRIFT with a dominant Galio performance. It sets the pace of the mid-game. After, Evos benefits so much from Valdez's Lee Sin in the early game. For Eagles Esports to lead into a really dominant win over SBTC to repeat what they did in day one of the Summer Super Cup. SBTC have to go back to the drawing board a little, knowing that they're going to have to go up against teams on the caliber of Eagles Esports as they break into the next stages of the tournament. That being said, though, they are still in decent standing. Most of them, I believe, both their match losses at this point have both been to Eagles Esports at this current stage. So the next big opponents are going to be the remainder of Group A between Team Secret and QWQ. Yeah, I mean, at this point for SBTC, they're fighting Team Secret for seeding in those 2-3 slots. And Evos are just looking to not trip at the finish line, walk all the way through, get out with that bye, skip directly to the quarterfinals. That's a very realistic place for Evos to be. Exactly, especially since they have that 4-0 to kind of round things off in day 3, just at the beginning of it. Puts them in a really good spot to pick up the bye. I believe that means they are immediately qualified to at least contest for that quarterfinal spot. So now it's down to the remainder of Group A, which we will be watching throughout the rest of the day to look and vie for those next 2 and 3 spots. And I don't think either team is content coming in as the 3rd seed from Group A into the next phase of the Summer Super Cup, because then of course you have to face against the 2nd seed from another group, and that could be a tough spot to be. Very scary. Take a look. भाई लोग मेरे पास अभी एक मैसेज आया राइट की तरफ से, मतलब एक इनबॉक्स में मैसेज आया, इंस्टेंट रिपोर्ट। Hemant Madan subscribe. हेमंत मदन थैंक फॉर सब्सक्राइब। इंस्टेंट रिपोर्ट फीडबैक आया अभी मेरे पास, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, पहले देख लो। Gives any sort of opportunity in what was SBTC's best team fight. Then things went wrong. Thipper was able to step forward and win a stacked fight in the jungle around here, and we skip past all of that to the end game, where it was simply impossible for SBTC to win a fight. The top lane got shattered open, and there was no way back into this. And G4 has really been performing on a lot of these control mages in the mid lane, bringing out the Oriana or TF. And it's difficult to ban him out because he's shown such proficiency and such impact on a number of these champions. Difficult to take him down, and so you have to bring in maybe a different mindset when it comes to laning against G4, not giving him the chance to just scale up as he did with the Galio, to rotate as he did. Yeah. Instead, maybe something aggressive like an Akali or Diana. Evos have done this to so many teams at this point, where Valdez gets things done early, and then they're just able to speed run through the mid game, oftentimes off the back of G4, who is our MVP. I also want to give a shout out to unsportsmanlike behavior was very bad, and the player you reported for the reporting his 50 but it is that one Valdez is the 5th man who gets him out ahead in the early game. Yeah, unsports mid game, and Valdez tends to fall behind on his picks, but it doesn't matter because the rest of the team has arrived and they speed run through the mid game. ये मुझे लग रहा है इस गेम वाला है. G4 and his team now have 4 wins in a row in the group stage. Really solid performance out from Evos. भाई किसको रिपोर्ट पड़ी है? We still have a couple more matches coming in the rest of the day. For now, we should be jumping into our next set, which is going to be between Team Secret and QWQ. 2 teams that are guys नाम तो नहीं दिया ना इन्होंने हमें into the next stage of the Summer Super Cup. You know, Team Secret, a lot of teams had expected them to perform well, and they've had some good moments. They had such a back and forth game against Evos last night. Guys, whereas QWQ नाम कहाँ है इसका? Quite find their footing coming into this मेरे को रोज आता है. And so now are at risk of being relegated from this competition. They need this win. सैरा का नाम कहाँ है? To potentially qualify, and in fact, I think they need a perfect. They might just need about a perfect split. सैरा का नाम ये तो है नहीं. To get into tiebreakers. Yeah, they have lost 3 भाई 30 दिन तक नहीं खेलेगी.
which means if QWQ want to stay in this tournament in any way, shape, or form, they need to, yes, beat everyone in the group. I don't want to be the bearer of bad news. They do have the most adorable team logo of any team here. I don't find that likely. I don't think the odds are high. The good news is QWQ can still go home with some money. We have an incredibly generous prize pool here provided by our sponsors. And that means that there is an opportunity for this team to continue growing and learning and becoming better over the course of the next season of play. 14 की win streak है, 11 की win streak, sorry. Is the second place finisher out of Hong Kong. और 5 They obviously had some weaknesses, but they've also been able to put out some very good performances, show some signs of life even across their 3 losses. Yeah, that's undeniable. They've had some good moments, being able to put Kuo and Bajai in a really good spot where they were able to bring their team into a really close match. Unfortunately, haven't been quite able to close out a game in their favor, whereas Team Secret moving into the Summer Super Cup, a lot of eyes were on to outperform and outshine their opponents. Coming into Group A, they faced off against some tough opponents from SBTC and Eagles Esports, and so now from the Philippines region, they have a lot to show that they are going to be serious contenders for that big title. सेब को गलती से कर दिया लॉल. मैंने समरर को बुलाया ब्रो. Out of the Philippines. तुम मेरी लॉबी में हो, मैं नहीं. What a lot of people expected at the beginning of the season. You have Team Secret, that's such an internationally recognized. I'm so confused कि ये conversation किस बात पे है. I think have very clearly demonstrated why they're the first seed out of the Philippines. Guys, chat में बताना एलिस्टार अच्छा है. If they want to take control of this, वो invite कर रहे हैं ना, सेब को गलती से invite कर दिया. For me, it starts right here. वो कुछ और बात है. चलो तुम लोग खेलो. Very cleanly, and we can start having a conversation about Team Secret getting out in the second seed with a little bit more advantageous placement. I think he is talking to this guy, Meek Gaming. हाँ वो कह रहे हैं ना, सेब को गलती से invite कर दिया. तो मैं बता रहा हूँ. Going to be that Gragas, and so taking away a lot of these strong power picks. Lee Sin still up, and so let's see if these teams. नहीं, ये वो नहीं कह रहा. कह रहा है शोएब को गलती से. तुम लोग खेलो. I think वो कह रहा है कि तेरा चिल सही हो गया. All kinds of exciting stuff. तो कह रहा है शोएब की गलती से. मेरा गाइस वो तो बता दो यार, एलिस्टार अच्छा है या नहीं? I think that's what he said. कोई बताएगा? शोएब को गलती से एलिस्टार अच्छा है या नहीं इस मेटा में? Not as big a अभी तक नहीं चल रहा या पिट रहा है अभी भी. Things they will do when they can't get that. आवाज आ रही है कैसे? हाँ. ठीक है, तुम दोनों खेल लो फिर, क्योंकि 2 सपोर्ट के साथ कैसे खेलें? Team Secret respond to those हाँ वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना. चलो ठीक है, तुम लोग खेलो फिर. Solid pickups coming in from QW on Zaya, and as well as the Olaf. I gotta love this. Knowing that Azar is such a proficient Olaf player, take that one away from him quickly. And Azar going to go to Darius. We see the Janna, Javan, and Kaisa locked in for Team Secret. Over on the QWQ side, I like what they've got so far in the bottom lane. They have the survivability and engage tools to contest in that Zaya Rakan. But I will always side with the Kaisa lane. I think Kaisa is absolutely broken right now. Especially with the team they've top. Team in engage composition, and they're going to try and get on QWQ backline. यार मेरे को बंदे चाहिए यार, सच बता रहा हूँ. That's why it's very important that they've got this Zaya as opposed to any other AD carry. She is a very good defensive. But rank push में खेल सकते हो अगर ढंग से आता हो तो. Concerned for QWQ, they haven't drafted for too much disengage, locking in the dynamic. भाई कितना अच्छा लग रहा है ना यार. Composition does well against Oriana and lane, but little to disengage for QWQ could just mean a collapse out from Team Secret. And on Team Secret side, looks like a pretty well-run composition. I'm going to give a slight edge. Flat 3 से ऊपर जा मुश्किल है. Second game from our group. तब toxic player आता है. Second game from day number 3 of the Summer Super. What do we do as we load in? Well, I like to पता है मेरे को भाई. I'm going to do so reasonably, Brandon. I don't think it's very likely that QWQ come out on top here. But
I do think there are stakes as well for Team Secret. Namely, if they don't Ignite से पूछता हूँ वो कब तक आएगा यार. likely that they're going to be able to leave this group in anything other than third. Guys, banning system आने लग गया. I think we're good. And also, if they don't win this dominantly, I worry for their run in the competition. They've shown some weaknesses so far. मेरा तो जल्दी खत्म हो जाता है ना. पीवीपी बहुत देर लगता है. They will win the team fight, shatter the early game, and then Team Secret tend to kind of shut और down. पीवीपी में सब तो ट्रोल करते हैं वैसे भी. And they don't know what to do on the map if a Drake isn't up, if a Baron isn't up. उसमें यार वो हील वो कैसे करते हैं यार? Sometimes it can be a little unreasonable, so to say. ठीक है तुझे पीवीपी खेलना ना लगा ले. आपका मैच चल मैं राइवल खेल रहा हूँ. मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा लो. मैं तो कह रहा हूँ एरएम में अपन हील कैसे करते हैं यार? बेस तो होता ही नहीं है वहाँ पे कुछ. नहीं वहाँ पर साइड पे हीलिंग का वो आता है. सब फीडर जंगल ले ली करने लगते हैं टॉक्सिक प्लेयर. A little bit of an exchange happens towards the Baron lane. Trevor going to be moving in along with the rest of his team to pick up this Scuttle Crab and deny it away from Tommy. Team Secret starting with a very aggressive Scuttle plan. This is probably going to get them a double Scuttle, which is a very significant jungle start. And you can see how they get it. Rome comes up from the bottom lane. Hammer's already setting up before there's even an opportunity for Q. डायना का आइटम भी आ गया जल्दी. ओ सॉरी डायना का साला पहला आइटम भी आ गया. It didn't matter that time because Tommy was slow on. तुम्हारे हिसाब से रेनेक्टॉन और डेरिस पे कौन जीत सकता है लेन? कौन सा चैंपियन ज्यादा स्ट्रांग है गाइस? पॉइंट में एलिस्टार को कैसे काउंटर करोगे एज अ सपोर्ट? By Chewy and Hamas, they were there for the zone. That's also Rom ले लो भाई. Zuri was roaming in from the mid lane. Pretty good lead with that. एलिस्टार कुछ नहीं कर सकता. It's going to be the double scuttle. वो कॉम्बो करने का स्टन पड़ रहा है. और अगर तुमने ब्रॉम से अपनी शील्ड खोल दी ना ज्यादा बेटर है. From Javan's jungle, spotted out by the रेनेक्टॉन विन लेन. So even as he tries to counter jungle, मेरे को भी रेनेक्टॉन का ही लग रहा है. Away by QWQ. And this is the part of the Team Secret game that always looks so clean. This is the part of the Team Secret game where they thrive. They're going to play a very clean first rotation in the jungle. You're going to see Trevor try to gank one of the lanes, usually mid or top. And then they're going to turn instantly towards the first Drake. Hang on. Might be a collapse onto Jackie. Shotgun's going to come through to get the knockup. I got it. Not the flag is dragged. I'm trying to find it. Jackie flashes away. Pops the barrier too for good measure. That's a win. It's a pretty good spot for Team Secret. Just have to burn the shockwave. Yeah, you get the flash there, which is actually very important because Jackie doesn't have as good engage. Like, the Diana is a threat regardless, but Flash Diana, much scarier to your backline, much scarier. So, अरे मुझे बताओ ये मीक वो कर रहे हैं लेकिन दिख तो कुछ और रहा है. क्या मतलब? And I kind of want to highlight, Tatsumi has been staying in lane for so long, constantly channeling his recall, hasn't been able to find this back. And so he just had the Sapphire Crystal, didn't have any additional damage. I felt like that could have potentially been the difference had he joined in with a little bit more. Finally makes the recall and right. मैच एक्सेप्ट करो मीक भाई. भाई खान भाई कर लिया. Don't worry. There is better in team fight because they have CC of Jana and Jarvan. They don't want to go instantly for it because they don't have vision control on the other side of the wall. They know there are some QWQ members here. QWQ were also very good on timing and are here starting to fight. This is a very good Match accept करो मीक भाई. Take it to Team Secret, disrupt because they did so. There is better in team fight because they have CC of Jana and Jarvan. अरे चल क्या रहा है? मीक को देख रहा था मैंने उसके YouTube पे लिखा था मीक मैच एक्सेप्ट करो भाई. अच्छा मीक लाइव स्ट्रीम कर रहा है. ओए मीक मुझे वो ऐड कर देना. आज रात को मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर बन जाए. ठीक है.
cannot अच्छा quite कल मुझे find बोला that था because हरामी QWQ down, but QWQ come up अरे with हाँ, the you're dragon my with the first boost subscriber turret ना. exchange. First मतलब पहला वाला Yeah, नहीं, the this first is few. worth it. QWQ trade First batch of kill and a subscribers. turret for only और the Drake and पहली only बार मैं amount खेल रहा हूँ Drake Irelia, ठीक है? down. मुझे And I तुम really expect मत करना. liked everything QWQ did to force that fight. They bring all 5 players down towards the dragon, and Team Secret are अरे हाँ, you're my first subscriber. भाई कुछ बोलो मत भाई, उसकी सब अपनी वॉइस आ रही है यूट्यूब पे. पहली बार मैं खेल रहा हूँ भाई फर्स्ट टाइम Irelia का बिल्ड किया. भाई ये क्या है ये राइड गेम्स फक यू Welcome to Wild Rift. इसे क्या हुआ भाई? ये इतना एक्साइटेड क्यों है? The storm approaches. Yeah, I mean, the problem is you take it. Minions have spawned. ये क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ ये क्या हुआ भाई जो भी देख रहे हैं स्ट्रीमिंग यार बंद कर दो यार, आवाज आ रही है पूरी रिपीट. भाई जो भी देख रहे हैं स्ट्रीमिंग बंद कर दो यार. बिना नेटवर्क के ऑफलाइन भी सुनने को मिले तो मुझे भी सुने कोई, मतलब कोई और. आप सुनो मॉडर्न बॉलीवुड फीचरिंग मी. Upon the wind, for tranquility. जाना नर स्टिल गुड. हाँ तो है With ease. Gale winds unleashed. Middle turret is under attack. Breathlessly. With ease. Retreat. First blood. You have been slain. थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा मुझे लग रहा है. मैं ज्यादा ही जाना के साथ आगे खेल रहा हूँ. In harmony. मेरी गलती है, मेरी गलती है. सीख रहा हूँ. Middle turret is under attack. Swiftly. For tranquility. On my क्या हुआ? way. Bottom turret is under attack. अरे ये मर गया था, ये मर गया था. You have been slain. इतना टाइम लगता है In हमें यार. harmony. Middle turret is under attack. एक भाई कैसे हो? निंजा एक्स वेलकम. कैसा मेरा भाई? ना जाना वैसे पहुंचा रहा. पीवीपी और रैंक पीवीपी. Breathlessly. गेम हार रहे हैं ना इसलिए. At one. With ease. Ally slain. Enemy slain. Retreat, retreat. I like this. मैं बढ़िया निंजा भाई, तू बता तू कैसा है? The Tempest ally slain.
जुकाम हुआ, हाँ जुकाम हो गया सुबह सुबह। Middle turret is under attack. In harmony. Retreat. Retreat. Ally slain. Top turret is under attack. Breathlessly. Top turret is under attack. Enemy slain. You have been slain. भाई क्या है? Ally slain. Enemy double kill. Enemy killing spree. मेक भाई स्ट्रीमिंग से Enemy killing spree. स्ट्रीमर से Attack this champion. मेरा भाई वो ले नहीं है, बट वो भी तो होना चाहिए ना मेरे भाई, अभी तो ले नहीं सकता। The enemy team has slain the dragon. Upon the wind. Middle turret is under attack. आप रे ले लो, लेंगे लेंगे, डोंट वरी यार। थैंक यू सो मच बोलने के लिए। Top turret is under attack. The rift on my way spawned. Swiftly. Retreat. Middle turret is under attack. Enemy rampage. Enemy double kill. कॉफिन भाई क्यों ले रहे हो? Enemy slain. Ally slain. Ally slain. Bottom turret is under attack. Enemy is dominating. अरे मेक भाई कर रहे हैं यार? Top turret is under attack. In harmony. Enemy slain. Shut down. The enemy team has slain the fifth herald. I dance on your grave. Bottom turret is under attack. नहीं बैक भाई PvP है तो क्या हुआ? ये एटीट्यूड मत रखो कि PvP है तो मरते जाए अपन। Enemy rampage. मेक भाई आपका पोजीशन खराब है, जाना से पीछे होके Middle खेलो turret is under attack. तो सपोर्ट है। ठीक ही रहा हूँ। Top turret is under attack. Upon the wind. कोई अंदर घुसने वाला भी तो होना चाहिए ना। Turret is under attack. Enemy is unstoppable. Turret lost. Enemy slain. In harmony. Enemy rampage. ओए 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 The tempest is upon me. Swiftly. ओ भाई You have slain an enemy. Shut down. And you thought it was just a harmless breeze. उसको घुसना होगा, वो तो मेरे को ही पता है, बट वो नहीं घुस रहा है ना अभी। वो घुसेगा तो मैं उससे शील्ड दूंगा।
middle turret is under attack. For करो tranquility. यार, हेल्प करो मेट। Turret lost. Swiftly. On my way. Ally slain. ये डैया से बेकार क्या कर रहे हैं? इतने फेडे वो लोग। Upon the wing. The enemy team has slain the dragon. बैक हो जा। Baron Nashor has spawned. Enemy double kill. Ally slain. Middle turret is under attack. You have been slain. Bottom turret is under attack. Turret lost. Middle turret is under attack. Turret is under attack. Turret lost. Ally slain. Swiftly. Ally slain. Enemy is dominating. नहीं चल रहा भाई, नहीं हो रहा। ज़्यादा ही सेट हो गया। Inhibitor turret is under attack. Turret lost. Enemy slain. I dance on your grave. By your command. ये वही आपको एक रैंक में नहीं जीतता ना, वही आके ईगो सेटिस्फाई करता था पीवीपी में। मैं तो पहली बार वो भी ट्रायल। हाँ, मैं भी पहली बार आयरेलिया खेल रहा हूँ। Enemy killing spree. अब खुश होगा अब ये कि हम जीत गए। With ease. मैं अगर खेलूँ ना अपना मेन चैंप स्टाना का ऐसा करो देगा ये। Upon the wind. Ally slain. Enemy rampage. Enemy double kill. Enemy is Kedot, welcome bhai. पीवीपी में मौज हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, In harmony. You have slain an enemy. Shut down. Oh भाई, जानर को शट डाउन। watching summer club. In harmony. That's why I did not join early. हम भी वही देख रहे थे। हम तो अपनी स्ट्रीमिंग वही देख रहे थे भाई। The dragon has spawned. With ease. At one.
स्टील हो गया मत छोड़ दे इसे, मरने दो सुजीत भाई वेलकम। पीवीपी खेल रहे हैं। अरे this godlike. Wow. Spotify Premium. Nexus is under attack. My brother, take rest. Find better teammate. Find better teammate. मिलने में तो चाहिए. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Top turret is under attack. Turret lost. Enemy slain. Enemy is dead. Enemy double kill. Enemy slain. Ally slain. Enemy killing spree. तबीयत भी सही नहीं है. ग्रागस मारेगा सबको देखना. मारेगा उससे एक नहीं Nexus is मारेगा. under attack. Nexus अरे is वो under attack. नेक्सस के अंदर भाग सकता था वो. Defeat. Assassins like the arc that we've seen so far. So Bigatron just looking for some stable bans. I think the other side of the coin we have to talk about is that Geek Fam looked more like themselves yesterday, right? This is a team that hasn't been able to hit the peaks they hit during their Malaysian region regular season, but day by day, day 1 to day 2, they've looked a little bit more aggressive, a little bit more themselves. And so going for an Akali early on, okay, I like this. It's like you said, Geek Fam feeling more comfortable in their own skin, joining into the competition. They had a rough start, and now going for this Akali Garen really goes to show the aggression you want to go for. Rest लूँगा मैं सोच रहा हूँ rest लूँगा. I would go as far as to say क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई ना यार. leaders in terms of meta, in terms of new ideas in what they want to play. We've seen some interesting things from them before. Stuff they bring into the jungle. So instead, going to lock in that Lee Sin. Lee Sin's solid, aggressive pickup. It has a high win rate throughout games, and for good reason. It's such a big playmaker. If they can make good use of this, I think Geek Fam could pick up a really strong early game. And the most exciting part to me is that we have such disparate playstyles being built for here. Geek Fam will complete their roster leaning into that Akali, leaning into that aggression. And on the opposite side, Bigatron, they've scaled all the way back. This is a very defensive composition. Defensive composition aside, I would say Geek Fam have also been able to round off their composition well, bringing in the Braum. Having that Glacial Fissure is a big disengage tool. Without that, you could see Falk, Henry, Harry just jumping in and taking down Momo. So they have to be so cautious about that. The Braum really is going to be that main team, and without him there, these big fights, these 5v5 fights are automatically lost for Geek Fam. It's game time. Bigatron, over on the left-hand side of your screen, are going to play a little bit slower normally, a little bit more controlled, wouldn't you say, Grandon? Oh, absolutely. Geek Fam love to play things a little bit slower and start playing it around the objectives. Once they come up about the 4-minute mark, they aren't necessarily the ones to make the biggest plays early on. That spot is kind of reserved for teams like Evos, like Secret that we've already seen. Instead, they focus on strong fundamental laning and going for these objectives later on in the game. And on the opposite side, Geek Fam
haven't looked like themselves in this tournament, but at least at home, they're known for these crazy aggressive lanes. So trying to go for an aggressive pickup with the Ezreal Braum has pretty good dueling potential against his Rakan. यहाँ पे रकान जाएगा, शायद एक किल मिलेगा. Arcane shift forward. Momo मुश्किल यहाँ पे एज़िल के लिए, यहाँ पे एज़िल जाएगा. And now Nyx is low. क्या बात है. Duo will get the kill. Momo falls as well as Control arcs into the lane. And the early trading goes to Pegatron. 2 for 1. Oh, you're kidding me. Mid lane too now. Zorbeki takes a lot of damage. But wow, Geek Fam, they jump in, almost take down Harry. He loses all his summoners. At the same time, Diwa was almost dead. Finally goes down to the minions. They have to be thanking their lucky stars. They still had some vision. The aggro was still there. Without that, man, that would have been such a disastrous fight for Geek Fam. Yeah, they really wanted to shut down Dua and Harry there, but you're doing that into Xayah Rakan, which is maybe the most survivable lane in the game. So they just keep disengaging, stepping back, and Momo spends his mobility going forward to try and close the kill. And now it's going to be a really different dynamic because Momo, he doesn't pick up the kill. He gets an assist and instead has to go for the Tear of the Goddess. And it's a big difference. It's a far cry from seeing a full BF sword completed from the Xayah. So much more damage. You talk about sustain from the Xayah Rakan. You're absolutely right. On top of that, the dueling pressure from Xayah Rakan is something that you cannot ignore. Let's take a look towards the Baron lane. Some pressure coming up from Rumple, but he isn't able to find too much with Control just hovering by the side too. Oh, did he? Did just steal away the blue buff, which is very exciting. So actually gets an early buff lead in this early game, and you can take a look. He has one of the Skull Crabs too. It's a pretty good exchange overall. Control did manage to get that first kill, and so I like the fact that Rumple traded back quickly when he knew that the enemy jungler was down towards his dragon lane. Yeah, like you say, he saw Control down bottom and said, hey, I can just walk in up top and get an advantage. They also have that entire top side of the map lit up. So Ozurfaki going in for the Squire's Blue knows that the enemy jungler is somewhere nearby. Yeah, he खेला. That close though. Control comes over. Trolling कर रहा है भाई Lee instantly undone. And here, as we load towards our first Drake of the game, Bigatron have a man advantage. And that is about as bad of a play as you wanted to see coming out from Geek Fam. To start things off a little bit too greedy, you know, that's Lee syndrome in a nutshell. Saw the Sonic Wave land, and so had to proc the Resonating Strike. Instead, takes so much damage in the turret because you can't ignore the fact that Henry is on this Galio. He has so much control in the mid lane. And like you mentioned, Dragon coming up now is a good chance for Bigatron Esports to go and pick this one up. Unfortunately, Control hasn't had the chance to reset yet, and so still looking at just a single longsword, whereas Rumple is now joining back in, has the Phage already completed, so it's going to be a pretty significant difference with the jungler items. Nah. A worrying sign for Rumple. Nice ultimate यहाँ पे लीसिंग का वो भी क्या बात है वो भी बहुत बढ़िया खेल है भाई यार काली ने यहाँ पे अल्टीमेट मारा यहाँ पे गाइस काली डबल किल लेके चलेगी बहुत ही बढ़िया है इसलिए अल्टीमेट यहाँ पे बंदे गैलियो भाई ने यहाँ पे डॉज मार लिया यहाँ पे गैलियो बहुत ही बढ़िया नाइस और यहाँ पे रेड टीम सीधा यहाँ पे जा रही है ड्रैगन स्टार्ट करने के लिए ड्रैगन स्टार्ट भी कर लिया एंड दे सीरियसली डोंट हैव एनी विजन भाई ब्लू टीम के पास विजन है जब भी कोई नहीं जा रहा भाई ओके क्लाउड ड्रैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इनके हिसाब से क्लाउड ड्रैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सीधा इन्फर्नल और क्या कहते हैं तुम्हारा एल्डर ड्रैगन लेंगे बस ये That was such a good team fight. The focus on Control, genuinely so impressive. And so now you take a look back. Okay, lane change हो गई है. He came back from that fight. Like you mentioned, he had the item advantage, steals away the jungle cap. I'm not sure this is a good one for Control. Oh, no. बस lane Control maybe overstaying as well comes down here. There was a lane swap for Geek Fam, so they were at a man disadvantage for a moment. Now Nick steps in. And that should be enough. Bigatron back away. I don't think anything else will be found here. So
just trading a little bit of pressure and control, gets his revenge, comes in to steal the Grum, says, you may have taken the dragon, but I'm gonna see your jungle camps away. Instead, they switch their attention back up to this Baron lane. Henry makes his way up, and with control, they have such a good combo to lock down Momo with the heroic entrance. It's difficult for this Ezreal to get much done. Turret will fall. Ezreal joined now by Nyx, as Momo and Nyx will scare away control on Valve 1, but they can't regain control of the turret in time, so it's still Bigatron getting a macro lead. The next skirmishing target is going to be this Rift Herald as it comes up. GeekFam are going to skirmish for this top turret. Control guiding away, Henry in the meantime. Landing a very good taunt in the mid lane, will be able to slow down the Shang and maybe find revenge for how low Dua is. Nobody dies in mid. Rift Herald will be zoned, controlled by GeekFam, and they're going to start it as well. Okay, GeekFam coming in strong. They almost take down D1, but they find control and even take his flash out of the equation. So this means Rift Herald should head over to GeekFam. They can use that to equalize turrets, break open the mid lane, and find the gold lead after not such a great position. That's the Globe Herald slain for GeekFam. Now could use this in the mid lane. Wait for the dragon to come up. They have pretty good wave clear with Zoraveki, and again, he is that big presence for GeekFam. You know, whether it's on a control mage or it's an assassin like the Ahri, like the Akali, he gets so much work done. In this case, matching Henry so well, and Galio hasn't been able to find a single ultimate through this game yet. Yeah, I mean, this is, I think we just have to point out, GeekFam playing up against elimination. If they lose this game, there's no way for them to make it out of groups. And this is the best they've looked yet. So back against the wall, GeekFam find that power spike. This is that point where you hit Saiyan mode. The first time when you realize that you have that next phase, and so they get this big power up. Zoraveki bot. Oh no. Zoraveki, heard you talking about, is in trouble. Will go into stasis. He gets away! The smoke veil, stasis combo. लंच में क्या है? आकांक्षा वेलकम. लंच में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, नहीं, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी. Didn't invest all that much. Looking at Harry here, he didn't invest the quickening to try and confirm that kill because he didn't feel like he needed to. But because of that, we saw what happened. The Akali gets out, resets, and should be able to join in on this dragon as it spawns in 20 seconds. Rift Herald up in Rumple's inventory too, so they could use this to make a big play. I'd like to see it. Use that Rift. और आप कैसे हो आकांक्षा? Set up through it to get How a are you? very easy second Drake. Bigatron aren't going to let it happen though. You can see this aggression already. Are you vegetarian? Yes, I'm vegetarian. Led by Control, who gets a knockup. Rumple is able to get away. Bigatron still in control of the river though. They have a ton of vision here. I'm sweating watching Rumple play. He jumps in any chance that he gets, and although I can respect the aggression, sometimes I don't think it pans off too well. If Harry had invested a little bit more, controlled it, they could have potentially got this kill on the Lee Sid. And without the jungler, what are you playing for? You can't get this dragon. Rumple has the Rift Herald as well. Only X. So there's Egg lover. an awful lot of value on a man who is just going. Omelette. Rift Herald. That's it, only. Due date, so it will be summoned. Nothing else. Is pulled out, isolated in the bot lane. Control reads, will finds a knockup. Zoraveki has back. यहाँ पे क्या ही ultimate मारा भाई. Galio का ultimate आ चुका है. The full heroic entrance follow up. It's not enough though. GeekFam are able to reset and come into the front line, shutting down Harry. And you've got the Shang taking everything down. 2 kills over to GeekFam. They're going to keep pushing forward. Zoraveki challenged by Dua, who's stepping very aggressively into GeekFam, but it should just be a Drake. And how did all of that start? Zoraveki holding 2 towards that dragon lane, waiting out in the Twilight Shout as we now see a fight breaking out again. Nyx into the front line, rooted there. It's control of Dua kite away. In the meantime, this Drake is so incredibly low, and Rumple's dead. Henry assassinating Rumple. That makes the Ocean Drake very sketchy, but it will still go over to GeekFam, and Dua is able to kite away. Zoraveki, 1 HP shut down on the other side of the stasis. Bigatron are able to turn a fight. They lose the Drake, but they come out ahead in player kills. The True Barrage finds Dua on the exit, and
Bigatron Esports for a moment finally looked like they got the fight they wanted. They got kill onto Azurovec, they took down Rumple, and so for a moment it looked decent. But GeekFam find more in exchange. The Rift Herald broke open the mid lane. Meanwhile, they got that dragon, and finding that last kill on the Xayah on the exit is just icing on the cake. GeekFam finally find their footing in the next game as they have their backs against the wall in relegation. And so now GeekFam, they have to keep this aggression going. This is where they're strong. Rumple is looking for these opportunities for his team to continue and follow up with, especially with the Braum. They can look for these quick catches before the Galio can look for that full heroic entrance. Tournament, yes, Ninja Expo, iconic series चल रही ना. Because Xayah is such a late game. गाइस जो भी देख रहा है बस लाइक कर देना यार, जिन्होंने लाइक नहीं मारा प्लीज लाइक कर देना. देखो सपोर्ट मिल जाएगा आप सभी को. सपोर्ट चाहिए बस. एंड गाइस जो भी बंदा चैनल को सपोर्ट करना चाहता है बाय टेकिंग अवर चैनल मेंबरशिप, डूइंग सुपर चैट एंड डूइंग PAYTM आल्सो, यू गाइस कैन सपोर्ट द चैनल. I'm so scared. Rumple just goes in on any opportunity. But GeekFam, despite having तबीयत सही नहीं है ना तो गेम खेलने का मन नहीं कर रहा. don't have that much in the goal. सोचा आइकॉनिक सीरीज देख लेते हैं. Don't have that much in terms of a compositional advantage. थोड़ा सीखने के लिए मिल जाएगा. That as we go on here in this hour, things are going to turn back over towards Bigatron. Oh yeah, I think you're absolutely right. Bigatron have plenty of scaling options, and only being down a little bit in gold and taking a look at where most of the gold is, being on Henry and being on Diwa, they have honestly a really good spot to just scale back up. Their main carries have plenty Braum का पहला आइटम देखो. right now. Control Randy is and facing a little bit of an existential crisis. Randy वाला आइटम बनाया Doesn't quite पहला. know what he's supposed to do. Rumple, on the other hand, has इससे पहला आइटम यही क्यों बनाया बताओ चलो. and let the fight, the start of many a fight at this point. That put his बोलो team in a guys. good spot. Again, getting a lot of damage on the Harry. इससे पहला आइटम यही क्यों बनाया. To try and look for a fight here. Instead, get control around the Baron, wait out for the Dragon, and force him to make a decision. Considering Inferno is next to spawn. GeekFam do have that Baron zoned off. I would be very interested to see them force a fight now, which they could. We'll see if they have the ambition for it, as Control and Harry are instead spending their time down bottom, setting up vision around this upcoming Drake. And so, Rod of Ages, Rabadon completed for the Galleon. You take a look at Lichbane, Oblivion Orb, and Rabadon completed for the... Hey, slow welcome संदीप मेरे भाई. yes guys टूर्नामेंट चल रहे हैं, आइकॉनिक सीरीज चल रहा है तो वही देख रहे हैं. क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना मेरी तो इसलिए मैं गेम भी नहीं खेल रहा, प्लस मैं 3 गेम हार चुका हूँ. Being able to take down the enemy carries in good spots. गलत मेरे साथ तो भाई टाइम ही गलत चल रहा है. और स्लो एंड कैसा मेरे भाई. अरे ड्रोन वापस आ गया. Defensive. This is the way Bigatron want to play. Like you talked about, they have the scaling game. They have the late game. And they're comfortable waiting for it. सामने Xayah कैमिली भी है ना, अटैक स्पीड वाला इसीलिए बनाया है. The Ezreal picks up 2 items checked off that box too. Dragon coming up, they should look for his fight. They can take down Diwa, might be able to even go as far as to take down Harry. With this Akali, if you're able to take down most of the playmaking and damage from Bigatron Esports, they really don't have much more left in the tank. And because while the gold looks pretty even, most of it is on the Xayah in the Dragon lane. बीच में कब खेलोगे. खेलेंगे भाई, तबीयत तो सही रहे. GeekFam, as you talked about, need to fight this. Azurovec is still in the bottom lane, nowhere near the Drake. As GeekFam begins to maintain control of the area, Momo into the front lines, forcing Bigatron back. GeekFam now have control of the river, but Control is going to step up into it alongside Harry. They're going to be able to threaten GeekFam enough that this Drake take isn't safe. It is worth it. They know what's up. The Shank pops the blast cone. That much harder for Bigatron to get in here. So they walk up the old-fashioned way, and GeekFam, seeing that coming, simply cancel and shove in mid. But Azurovec just taking this time to farm the jungle, I'm not quite sure I agree with this play. Sure, they don't want to, especially when they don't have to, but going for the jungle camps instead of looking for a possible angle, not the best. Ultimatum. He's called the Shank, caught in the ultimate. Here's the follow, heroic entrance as well. Bigatron
find a very good start to the fight, but they don't kill the Shang. Rumble drops into stasis in the front lines. Finally, Henry will go down. The Shang able to find a massive shutdown. And there's Ozurabeki. A double kill. Cleans up the fight as soon as he arrives. Ozurabeki gives Geek Fam a massive team fight win. And a big run for the money. Bigatron Esports not gonna be happy with this one. Geek Fam finally get the big fight they were looking for the longest time. Snowballs and propels themselves ahead in goal. 5,000, the biggest lead we've seen all game, and this means the Dragon converted over onto Geek Fam. They choose to push out the bomb wave instead of going for his Baron. This is understandable. Right, give copyright to Meek. दे दे क्या जा रहा है? Delete मार देंगे live streaming को. Ban permanent. आज ही कर दिया. इतनी औकात नहीं है इसकी. They're gonna reset, come back in stronger, pick up another fight, yet a वो game में ही कर सकते हैं. इसमें नहीं कर सकते. So critical here, has multiple survivability items, and with a heavily physical damage composition, Bigatron Esports have a difficult time taking down this Garen. Harry and Control zoning here. They know what's BGMI का क्या scene है पता नहीं भाई. Geek Fam are about to start this Baron. खत्म. Like you were talking about, किस चीज़ का? बहुत खतरनाक टीम आती है यहाँ. Oh, they took the blue buff. They stole it away. I'm sorry, that was just way too entertaining to see. So Bigatron Esports once again, the tough spot they just have to keep trying to scale back up because IGN India. with how strong the Shang is, there's only so much he can do. The Felp is a big split pushing threat, and with the precision protocol, can get good damage. Ooh. All alone, Control into the front lines. Will be backed up now by the heroic entrant and Harry. They've got a good taunt as well. Geek Fam very low, but Control's going to be the first player to die. He finds a trade. Momo goes down. Do and Harry cleans up in the meantime, though. Massive plays from Ozurabeki yet again, just sweeping round the side. And that will be Geek Fam coming out on top of a scary fight. The cornerstone of Geek Fam, Ozurabeki, comes online and takes down the members of BTR. And like we said, Love Indonesia. Where's the gold on? It's on. Yes, love Indonesia. On Harry. And if these two cannot join the fight, there's nothing Bigatron can do. You don't expect Control to do much at this point. You don't expect Harry to do much at this point. They get a little bit of crowd control. They find maybe a little bit of damage. But the bulk of it, the bulk of the fight's impact. Data sent China server भी नहीं. तो क्या हो जाएगा? तो आ तो गया यार. कौन सा ban कर देंगे? Heal तो चलेगा नहीं कि ban करो, unban करो, ban करो, unban करो. Jadeja bhai, welcome. A little bit too worried about misstepping and making this Baron call. I feel like they could be going for this chance. ID वाले India team. Stronger and a little bit earlier instead of waiting for Bigatron to come back in. Rumble trying to solo out the Rakan. होगा, क्यों होगा? It's not gonna happen. He's too fast. So now Geek Fam crashing in the wave, and this is a good decision from them. If they can crash in the mid wave, crash in the Baron wave, Baron lane wave, they can convert that into a Baron start. Force Bigatron to walk into them. Control, of course, could dive in with the Galio. But with how far and how wide the team fight could spread out, Diwa could be in a spot where he just cannot offload any damage at all. And so Geek Fam taking it slow. This is one of the longest games that we've seen in a while at this point. I really respect Geek Fam playing it a very disciplined way. Finally starting up the Baron, perhaps. No, because you've got this split lane on the opposite side. And Bigatron are going to take advantage of that, knowing they have a man advantage, but do is instantly split from the fight. Caught alone, jumped by a true shot, and here comes Ozurabeki. Do is still live with a flash. Heal, Featherstorm, that keeps him going. Ozurabeki, no HP, in the stasis, will flash away to safety. Bigatron survived the attempt, but they lose control, and with a jungler down, Geek Fam have no excuse to not एक बहुत ही bad. And Henry was so clutch there, denying Ozurabeki from jumping in and taking a great fight to execute Diwa. Without the Xayah, there's no chance of stopping this Baron. At the very minimum now, Bigatron Esports could look to delay this or force Geek Fam to reset. Instead, they're just going to look to try and move in, but Ozurabeki is such a big presence, such a big threat. Not too much they can do here. Yeah, just throws down the smoke now. Henry in, taunt.
should be able to find the kill, but he's not going to get the Baron. That Baron over to Geek Fam. A double kill to Ozarabeki. Oh my lord, a triple. It's going to be the Globe Baron power play, followed immediately by an Oppo team ace. Geek Fam in dominant control of the game. They're going to run all the way down and keep their tournament hopes alive. With this win, Geek Fam are going to stay in the Summer Super Cup. They have an opportunity to get out of groups. And finally gets that बढ़िया win. खेले भाई। They are so happy. You can see so the बैंक का सीन है ब्रो, बट शायद डाटा ट्रांसफर के लिए हो सर्वर। They're still in the running. They have the next match up against Esports, and if they can repeat what we just saw happen here, there's a chance they could take down the giants of Group B. प्लेस सब क्या लो have to play back-to-back games though. So we're gonna need to see whether, you know, we always ask, are you warmed up or are you worn out? Yes, we'll finally get to see which one of those matches more. Here's your end game scoreboard. Ozarabeki, what a performance. चलो यार चलते हैं हम। Going 7-1. मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है। मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है, मैं खुद रेस्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं लिफ्ट आ गया, फिर गया नहीं चलने वाला इतनी साला, जब भी देखो बीमार रहता। क्या करे, वीक हूँ थोड़ा भाई, क्या करे। कल बहुत कुछ खा लिया ना, उसकी वजह से। मीक मरीज चुप रहे साले, तेरे इंजन में मुद दूंगा, चुप हो जा। चलो गाइस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट यार। लाइक मार देना, लाइक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मिलते हैं आप सभी से बाद में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज मैंने स्ट्रीम में बिल्कुल रेज नहीं करा, ना चिल्लाया बिल्कुल ही। इसको कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। दो तीन दिन और स्ट्रीमिंग, दो तीन स्ट्रीमिंग पे और ट्राई मारेंगे। अच्छा लगेगा तो बताना। तो मिलते हैं बाद में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।